CV Bhatt. अगला फॉर्मेशन 5 रफाल लड़ाकू विमान 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से. Excitement galore at the Republic Day parade right now. Speed, pulse racing, daring, and of course there is precision. Wing Commander M.K. Singh, Wing Commander Abhishek Tripathi, Wing Commander Arun Kumar, and Wing Commander A.D. Chowdhury. Formation airborne from Air Force Station Jodhpur. Rafale twin engine 4++ generation. Beautiful visuals Induction into the fighter fleet of the Indian Air Force. from our cameras, With a wide range of weapon platforms, giving you an actual feel of what the fly past entails. Now we have Vinash approaching the saluting base, comprising 5 Rafale aircraft. Arrowhead formation, 300 meters at the height of AOL, above obstruction level. पलक झपकते ही ये यहाँ से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दूरदर्शन के कैमरा इनको दूर तक कैप्चर करते हैं। और अगली फॉर्मेशन के लिए अब आप तैयार हो जाइए। अगली फॉर्मेशन है बाज। इस फॉर्मेशन में 1 रफाल, 2 जैगवार, 2 MiG-29 यूपीजी, 2 सुखोई 30 MKI विमान 7 एरोहेड फॉर्मेशन में 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। नेतृत्व विंग कमांडर विक्रम कर रहे हैं। अन्य पायलट हैं जैगवार में ग्रुप कैप्टन एन अभिषेक और सैफ जैदी, MiG-29 ए रंजन और विंग कमांडर मुकेश, सुखोई में विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर ए के तिवारी, और ये आए बास फॉर्मेशन में। The Bars formation going past. All eyes up in the sky. Heads turned skywards. Gaze searches for the glimmer of silver. A message goes out to the future. We see you and we're preparing to meet you. Specially recorded for you visuals. Here, Aircraft will split outwards and upwards, forming a Trishul in the sky. Sukhoi 30 MKI and Air after the bars, we now look forward to the Trishul formation, comprising 3 Su-30 MKI aircraft, which will fly past in VIC formation at 900 kilometers per hour, maintaining 300 meters AOL over water channel north of Rajpat. This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. Going higher up into the clouds and then peeling into 3 different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. The other pilots, Group Captain Karan Deo and Wing Commander Gaurav Sharma. और अब जोधपुर से उड़ान भरकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमां को चीरते हुए एक लड़ाकू विमान। In the words of a pilot, the roar and the thunder can be actually felt in the pounding of your heart. 900 kilometers per hour. As these visuals tell you, absolute concentration